Hello everyone, good morning. So today is 18th of May 2020, which is basically number 9, which means Mars. Mars is the energy which is of courage. Mars is the energy which is prevalent everywhere, which means lot of action, which means army, which is means savior, which means senapati kind of energy which is prevalent today, which means that you need to take care of your kind of Hanuman thing. If you want to control your mind, you can do Hanuman Chalisa for 21 days, once a day, speaking out loud for 5 minutes, and will enhance your aura to a level where your aura will go to 10 meters for an hour, and that's the only perfect remedy for your controlling your Mars. Mars means blood. Mars means fire. Mars means lot of terrorism. Mars means lot of accidents. So if you want to control your Mars, you need to control your temper, you need to control your anger, you need to control a lot of stuff which is needed. And this COVID thing, we are hearing the news that there had been accidents, there have been people going from one place to another. Basically, the workers, they are going from one place to another, they met with accident. There are a lot of blood on the roads, blood on the railway tracks. So you need to understand this is all being done by Mars. Mars being in, which is kind of showing its aspect and on Capricorn, which is 5th house. So you need to take care of your Mars energy today. हनुमान चालीसा पढ़िए. अगर वो भी नहीं पढ़ना है आपको तो सिर्फ आप अपने टेम्पर पे कंट्रोल करिए. अगर आपको गुस्सा आता है तो पानी पी लीजिए. अगर आपको गुस्सा आता है तो नहा लीजिए. अगर गुस्सा आता है तो मुट्ठी बीच लीजिए. 10 to 1 की काउंटिंग करिए. Go back to the old rules and regulations which always work. So ये Mars energy है, तो आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए. अगर मार्स पे कोई और काम करना चाहते हो, you can get in touch with me and we have small remedies which will work wonders for you. Okay, let me try inviting other people, because every day I speak to the walls. Today I want to speak to the people. Okay, so let me do that quickly. My hand is hurting. I need to place this somewhere. Camera. Okay, so let me change it to, so by the time you guys join in, so let me just place the camera here, not here, place the camera. Okay, let me just keep it at home. At home, not in her hand. Okay, so it's like Pandit Just Raj morning raga. Okay, so let me start with the morning ragas. Pandit Just Raj Rag Bhairavi. So let's start with Rag Bhairavi today. So I will definitely take out your cards, but let me just have a background with Rag Bhairavi, which is by Pandit Jasraj. And I'm meeting Pandit Jasraj in Mumbai as soon as your lockdown gets over, to meet him for his health concerns. And we are planning to do something which is like together, where music will be done by him. And sorry, I took out the key from the, yes, now the raga will come in the background. So let me take out the cards quickly. आज की जो तारीख है वो है 18/5. लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हो रहा है आज. ये बात ध्यान रखिए, 18 से बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 से 28 तक कि आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि दिस COVID-19 will spread like anything. So you need to take care, maintain social distancing, do not go outside. If you are going outside, wear a mask. That is important, and safeguard yourself. That is very urgent. Safeguard yourself. Mars की एनर्जी क्या होती है? ब्लड होती है. मार्स की एनर्जी खून होती है, खून का जोश होती है. It's like सेनापति. It's like a warrior. It's like a constant warrior hitting in your head, like terrorism, like lot of attacks, like accidents, like blood on the roads, blood on the railway tracks. हम देख रहे हैं कि मजदूर जो जा रहे हैं उन accidents हो जाते हैं. तो this is Mars, sudden explosion, sudden. Okay, I got connected with my. Okay, wait, I got connected. So
I need to okay. So I need to wear the headphone. Okay, now it is connected. Sorry, there was a lot of hassle bustle. So the thing is this: it's Mars, which you need to take care of. Okay, let me invite a few more people in here. Oh, I don't want to talk to the walls. I want to pass on this information at least to one person, if it is possible. Okay. So here he goes, and let me randomly select 10 people today. Randomly select. Your number is coming 1, it's 2, then it's 3, 4, 5, then it's 6, 7, 8, and 9 and 10. That's it. Okay. So Mars energy बहुत prevalent है. अभी मेरे को राग भैरवी चलाने तो आपके लिए पंडित जसराज का. जब मैं उनसे मिलूंगा तो I'll come live with Pandit Jasraj and he will play the basuri and I might try to sing a song with him. Okay, so how wonderful that I can be. What an interesting point of view. How does it get any better than this? ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द हैं Access Bars Consciousness के Dr. Dean Heen and Gary Douglas. You go and search on the Google. जो भी देख रहे हैं अभी, I think this information is for you. Not I think, I feel definitely 100% it's you. So how does it get any better than this? How wonderful the life is. What a wonderful world. Okay, world without pollution, world without people on the streets, world where we can travel quickly, no hassle bustle, no jams. Jams are like, you know, it's been like ages since we got in jams. और अगर हम जैम में फंसते भी हैं तो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाती है. हम गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस रखते हैं, हॉर्न नहीं बजाते हैं, हम वेट करते हैं कि सामने वाले इंसान को ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होगी तभी वो जा नहीं रहा है. इतनी सुंदर चीज़ जो कोरोना कोविड 2019 हमारी ज़िंदगी में लेके आया है, क्या उसको प्यार नहीं देना चाहिए? क्या उसको दुआएं नहीं देनी चाहिए? क्या उसको ये नहीं बोलना चाहिए, बाबा योर वर्क इज डन, प्लीज गो, योर वर्क इज डन, प्लीज गो. ओके, बट उसके जाने के लिए जो एक निर्जीव चीज़ है हमारे शरीर में आके सजीव हो जाती है, उसको जाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप उससे रिक्वेस्ट करें, उसे फोर्स ना करें. उसको हमने ही बुलाया था, अब हमारी ही कोई गेस्ट हमारी मर्जी से आता है तो उसको जाने में उसकी थोड़ी फ्री विल भी होती है, राइट? अतिथि तुम कब जाओगे, इट डजंट हैपन इन द एस्ट्रल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो आपको ये परेश रावल जी जो आए हैं जो अतिथि कब जाओगे वाले हैं, तो इट्स नॉट GAY, इट्स नॉट गे मीन्स हैप्पीनेस. ओके, गे इज नॉट अ बैड टर्म. गे मीन्स हैप्पीनेस. Do not be judgmental to anybody. You don't know COVID is gay or female or male or without any sex or, you know, irrespective of discrimination, it's hitting anybody and everybody. But people are getting relief from it. Only those people are working on their Jupiter or their Mars. कभी गुस्सा मत करो. गुस्सा करो तो नहा लो. अरे बाहर चले जाओ बाबा, सिर मत फोड़ो. ठीक है? So this is what the message for today, and let's start with the morning raga, and then let me take out the cards for today, which are definitely from, okay, this is Rag Bhairavi for all of you. तो मैं ये राग क्यों सुनाता हूँ आपको, क्योंकि जो हमारा चक्रास है उन पे सारे गामा पा बहुत इफेक्ट करता है. म्यूजिक अफेक्ट्स आवर सोल, you know, it hits our soul directly. So let me put the camera here. I hope it will not fall. Yeah, it will. So cards are outside and I'm trying to grab them from inside. So let me just take out the cards from outside. So here we go. I have Angel Tarot cards, which are, and I would like to recommend one book to you, which is called Fakir. I am also writing one more book, which is called Fakir, which is not FAIR. It's FAREER. Okay, Fakir. No, FAKEER. Fakir. The ultimate yatra from 1919 to 2019, COVID 2019. So this is what I am writing these days, and hopefully if somebody is from the publishers and try and talk to me. We are working on a movie also, we are working on a web series also, we are working on songs for that. So a lot of stuff is going on, and in addition to that, I'm working with an IT organization where I'm an automation test engineer, you can say associate manager, you can say test lead, whatever terms you use. It's called Sapient India, which is Publicis Group, which is in Gurgaon, and I work in Gurgaon and Noida offices, and we have different areas like Bangalore and Mumbai offices also. And I work on a financial domain where I work with projects like RBS, I work with Wellington, I work with banks, different banks like
US Bank, like we work for US Bank, we work for Goldman Sachs, we work for Royal Bank of Scotland, we work for Wellington, we work for investment management people. It's not retail banking, it's investment manager, how you invest with money. Okay, so what I'm trying to tell you, कोई भी आपका काम हो, कोई भी आपका कर्म हो, उसे अच्छे से करिए. अगर अभी मैं कार्ड्स पढ़ रहा हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, अगर मैं न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन एक बैकअप ज़रूर रखिए अपनी ज़िंदगी में. अगर आप हीरो बनने चले हैं तो एक बैकअप ज़रूर रखिए कि आपका फॉल बैक प्लान क्या है. जैसे मेरा फॉल बैक प्लान एक IT कंपनी है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ. एक फॉल बैक प्लान आपका भी होना चाहिए. अगर आप म्यूज़िक में अच्छा करना चाहते हैं तो पहले अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करिए. अपने रूट्स को या तो देखो आपके पेरेंट्स उसमें हैं या आपके फैमिली में से कोई उसमें है. जैसे रणबीर कपूर के रूट्स स्ट्रॉन्ग थे बिकॉज ऋषि एंड नीतू आर हिज पेरेंट्स कभी जाते नहीं हैं. दे आर ऑलवेज इज एंड आर. ऋषि हैज़ नॉट गॉन आउट फ्रॉम रणबीर बिकॉज his father is Rishi Kapoor. So what I'm saying is, always make a strong foundation. Your foundation is very very important. With that foundation you can just lay. और मार्स यही बताता है कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने गुस्से पे काबू रखो, अपने गुस्से को पालो. अगर आपने एक पुराना एक सीरियल देखा उड़ान, जिसमें एक IPS ऑफिसर की जर्नी थी, कल्याणी, तो वो IPS ऑफिसर क्या करती है, वो अपने गुस्से को पालती है. एंड यू नो व्हाट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि he is just singing so well. So with this, एक और इम्पॉर्टेंट सीरियल आता था रेणुका शहाने का पुराने दूरदर्शन पे. उसमें ये था, आंखों में रोक ले तो ये आंसुओं का तूफान, जिंदगी लेती है हर कदम पे इम्तिहान. अपने गुस्से को पालना सीखो, अपने गुस्से को खराब करना मत सीखो. अपने गुस्से को पालो और सही जगह पर इस्तेमाल करो. और गुस्से को पालने का मतलब होता है मौन. हमेशा मौन का इस्तेमाल करो. What these guys are doing? हमेशा मौन का इस्तेमाल करो और कभी ये मत सोचो कि आपके मौन की वजह से कोई परेशान हो सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट गुस्सा दिखाने का, रादर अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल दिखाने का तरीका है मौन, चुप रहना. So let me take out the cards with this. These are the angel tarot cards, and let me quickly take out the cards for today because video will go on and on. I need to upload it on YouTube also, so it will go like anything. Okay. So let me take out the anchor card for today. So let me switch on the AC because it's getting hot. Okay, so let me take out the cards for today, which was like AC. So what is the anchor card for today? So this is the anchor card for today, which is Page of Earth. मैंने आपको क्या बोला, मार्स क्या मतलब है, आप मौन रहिए. मौन का क्या मतलब, धरती से ज़्यादा मौन कोई नहीं रह सकता. It's the earth energy you need to work on today, which is your Page of Earth. Basically a message from the earth, which is आपको डिपेंडेबल बनना है, पेशेंट बनना है. ऑब्वियसली पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर, श्रद्धा एंड सबूरी. एंड नीड टू बी सक्सेस, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल. गुड न्यूज़ अबाउट योर फाइनेंशियल मैटर्स, हाउ वंडरफुल दैट कैन बी. आप हमेशा फाइनेंसेस के लिए टेंशन लेते हैं, तो गुड न्यूज़ फॉर फाइनेंशियल मैटर्स. वांटिंग टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग इन न्यू एरिया ऑफ स्टडी, कुछ नया पढ़ लीजिए. ठीक है, कुछ नई किताब पढ़ लीजिए, कोई नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, यूट्यूब पे कुछ इन्फॉर्मेटिव देखिए. अच्छा, अभी हम देखते हैं एंकर कार्ड का सपोर्टिंग कार्ड क्या है. ठीक है, आओ one card just dance like anything. It's Ace of Water, means emotions, falling in love. प्यार में है किसके साथ, अपने साथ या किसी और के साथ. So it's like falling in love, a reassurance of a relationship, spiritual growth and enhanced intuition, a new home. Maybe you are trying to buy a new home. Maybe you are trying to work on new business. Maybe you are trying to make a love effort. Maybe you are trying to rejuvenate your existing relationship. How wonderful that can be, and how does it get any better than this? So with this, let's take out any obstacle card for today. So what is the obstacle card for today? Let the card jump like anything. Let the card jump, 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 jump. Now card won't jump. So it's like, okay, one card fell and it jumped like this. So this is the dreamer. Dreamer is the third day dreamer is coming. Third day dreamer आ रहा है. ड्रीमर बेसिकली बोलता है अपने सपनों पे विश्वास करिए, आपका गुरु आपके साथ जरूर आएगा. इट्स लाइक लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज विल कम इन योर लाइफ. विद दिस वन मोर कार्ड केम विच इज 9 of water, विच इज अगेन योर इमोशंस. कल भी आया था, विश कम थ्रू, कंसर्न्स फेड अवे एंड लव लाइफ. सो ये बेसिकली हमारा सपोर्टिंग कार्ड था. और अब मैं फाइनल कार्ड निकालूंगा आज के लिए. व्हाट इज द फाइनल गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ अस? लेट मी जस्ट
It's two of earth, which is the final card for today, which is basically too much going on at work. एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही है. मार्स क्या करता है? बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन need to make a decision, consider a more playful approach. बच्चों की तरह चीजें करिए, things will be better. And now, you know, sharing is caring. So you want to share, you want to share, you want to share. Come. Thank you so much and good morning.